Welcome back to the channel after the weekend. Hope you had a great weekend. So, from the next week, Durga Puja will be starting, Navratri will be starting. Oh, festival के seasons आ रहे हैं तो there will be like break in my videos, but I'll update कब से कब तक. I'll not put videos and all. Okay, so last week we have started with Aphthous stomatitis, Aphthous ulcer. We have seen about major and minor ulcers, कैसे दिखते हैं and all that, उनके clinical features we have seen. उतना तक we have seen. Now we'll be seeing pathogenesis, differential diagnosis and histopathology today. Okay, let's start. So, the pathogenesis of Aphthous stomatitis remains unknown. The most possible theory explaining most clinical observation is that of an immune-based leukocytoclastic vasculitis. In this theory, either autoantibodies to oral mucous membrane is formed or circulating antibodies to microorganisms Streptococcus sanguis form antigen antibody complex with local vessel walls. इसलिए leukocytoclastic vasculitis. So, their immune complex together with complement initiate an intense cascade of inflammation mediated mostly by neutrophils. The secretion of cytopathic enzymes by neutrophils and other leukocytes causes tissue destruction and necrosis of the epithelium, recognized as an aphthous ulcer. तो मेन पैथोजेनेसिस क्या है इसका बोला गया है कि एंटीबॉडीज़ और ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, या तो ओरल एपिथेलियम म्यूकोसा के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगे या ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगे जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ फिक्स होके एक इन्फ्लामेशन कैस्केड इनिशिएट करेंगे, एंड वो जो बनते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस के साथ बनते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस. Recurrent herpes lesion will look similar to minor aphthous ulcers. Then Behçet syndrome will be dealing after aphthous ulcer or Aphthous stomatitis. We will be dealing with Behçet syndrome because it's also important from our point of view. So major aphthous ulcer will be similar to Behçet syndrome. मतलब दोनों का appearance same होता है ना. Oral lesion of hand, foot, mouth diseases. Diagnostic workup, no specific workup is required. Aphthous stomatitis is a clinical recognition diagnosis. मतलब इसका clinical features ही इसके जो appearance होते हैं अल्सर का वो खुद ही diagnostic है, तो इसमें कोई अलग से diagnostic workup की ज़रूरत नहीं होती. नाउ कमिंग टू हिस्टोपैथोलॉजी. अच्छा, हिस्टोपैथोलॉजी एज सच कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है इसका, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी पता चलता है आई विल बी डीलिंग विद दैट. द अल्सर ऑफन अपीयर्स पंच्ड आउट. Epithelial margins show no significant change, although occasionally edema may cause a slight separation of the epithelium from the underlying connective tissue. तो edema के कारण कभी कभी epithelium और connective tissue में separation हो जाता है. There may be some spongiosis. Spongiosis is intercellular edema, okay? And there is usually an intense inflammatory infiltrate at the base. Now, while neutrophils are typically seen on the surface of the ulcer, lymphocytes and macrophages are the main component. Neutrophil surface पे दिखते हैं अल्सर के, लेकिन जो main component है they are macrophages and lymphocytes. So major एप्थे सेम, मतलब ये जो भी क्लिनिकल ये हिस्टोपैथोलॉजिकल बताया है वो माइनर के लिए बताया है, तो मेजर एप्थस अल्सर का भी सेम होता है, बट ई के डिफरेंस होता है जो उनका इन्फिल्ट्रेशन होता है वो मोर डीपर होता है, वो हम लोग पहले क्लिनिकल फीचर्स में पढ़े हैं. तो डीपर होने के कारण क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स म्यूकस ग्लैंड ऑल्सो, एंड इट वे previously it were thought to be associated with salivary gland, hence the term periadenitis mucosa necrotica recurrence. तो पहले मेजर एप्थस अल्सर को ये भी बोला जाता था क्योंकि they were associated with salivary glands.
Now, the development of the lesion may relate to a lymphocytotoxic process जो हम लोग पढ़े हैं, because early lesion contain predominantly T4 lymphocytes. Before ulceration, in ulcerative phase T8 lymphocyte, whereas during healing phase T4 cells dominate. Okay, that's all for today. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.